Hello guys, welcome to Clean Slate Graffiti. This is episode 19 after a very long time. A I think very long before, time. Very yes, long time now. very long time. And I think before we proceed towards the episode, I think we owe an apology uh, to the people जिन्होंने हमें text किया, which was very sweet of you guys कि आपने हमें text किया to ask what's been up, why are we not posting episodes and everything. So yes, a big sorry to you guys. Something came up, something urgent came up, which I think Thomas would like to walk us through. And so, first of all, apologies for not continuing with it. When we started with this whole thing, one thing that we made sure was that continuity होनी चाहिए. At least हम content बाहर निकलना चाहिए. But and when the gap came, gap ऐसा गया कि 3 महीने का gap निकल गया. And 3 महीना हो गया क्या last episode डाले? I think so. More than 3 months. Oh shit, more than yes, 3 months हो गए. More than three. काफी लंबा period वाला. अक्टूबर में कहीं दिया था. Last, oh yes, correct. सही कह रहा है. So then, family issues थोड़े थे. Personally, थोड़ी medical emergencies showed up at our place. This is quite a big story in itself. And then things really changed, man. I mean, last time we had different jobs. And this time we are showing up. We have a different set of jobs together. Different set of jobs together, man. Dude, मैं इंडिया का चक्कर लगा के चला गया 1 महीने का, 1.5 महीने का. I mean, so getting our audience to the same page. We both have different jobs today. We both changed our jobs. I joined in around a month before, and right. I think Sid will be joining in another month. In a month's time. Yes. And yeah, things are changing. Things are changing really quick. Changing for the good, and the pandemic came to endemic stage. That too happened. Now, COVID is endemic, right? Yeah. COVID is endemic. I don't know, man. Every time I think about it, मेरे को तभी एक notification आ जाता था. WHO is predicting another new variant. तो मैं एकदम गांड में रहा. अब मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ. अब जिंदगी जैसे जीना है वैसे जिया जाएगा. अब वैसे जिया जाएगा. In fact, Bojo, you know Bojo? Who? Bojo. No. Boris Johnson, UK Prime Minister. अच्छा हमें नमो पता है. हम नमो बोलते हैं. अपना नमो है. यहाँ को बोजो. हमें बोजो नहीं करते हम. हाँ, यहाँ नमो, अपना नमो है. यहाँ बोजो है. जर्मनी में आमे है. तो अम्मे तो पहले टोजो करता था. टोजो? Tojo is the Japanese guy who waged World War II. Oh yes. Okay. Oh yes. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Oh yes. That's actually good. I mean, yeah. Come on. So was he also a kamikaze pilot? He tried to be, but never. End of the day, he died. So. Okay. So kamikaze, not a pilot. Kamikaze. No, but so Bojo has recently announced कि I think February end से या month end मैंने सुना है आज की न्यूज़ में. February end से no COVID restrictions. मतलब वैसे ही अभी announce हो चुका था, but still people were like wearing masks in grocery stores and in tubes and in buses and all. But उसने बोला अब कुछ नहीं है, सब chill करो. People who are flying from, irrespective of any country, they'll be flying into the UK. They don't have to do any quarantine, any COVID testing, any of those shit. Nothing. All they have to do is, in any case, अगर तुम्हारे मतलब ज्यादा ही चुल मच रही और तुमने टेस्ट कर लिया और तुम पॉजिटिव आ गए, तो फिर 5 दिन क्वारंटाइन करो खुद से. मतलब मैं नहीं पूछूंगा. मतलब बाकी तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम मतलब बहुत उसूलों के पक्के होगे तुम लोग, और मतलब मेरी हर बात का पालन करोगे. आज्ञाकारी नागरिक हो तुम मेरे देश के. That's I think on that principle Bojo has made this statement lately. So I think it's a good time to come to the UK. It's a good time. I mean, in a few months, it wouldn't be a good time. In a few months, I don't know, man. I think these people are in a zone कि वो मतलब see, how do you define a good time or a bad time? कि तुम्हें जब पहचान हो उस टाइम की ना, ये लोग जानना ही नहीं चाहेंगे कोविड है कि नहीं. ये distinguish नहीं कर पाएंगे. No, the point is, someone who's trying to solve a math problem so hard
At some point he's just अबे जाना है यार, मेरे को नहीं सॉल्व करना. ये वही हो रहा है, या ये फिर ये पीछे आंसर बताओ ना क्या है, हाँ ठीक है यही तो है, ठीक है यही आ जाएगा. हाँ, अब आ जाएगा. तो वही फाइनल That's अल्टीमेटम, ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो ठीक है अभी से सब ठीक है, चलो सब ठीक है. हाँ. नहीं, but also Omicron is just chill, man. I mean, no one really, I mean, it didn't create That devastating much of impact in a, India, at least. Yeah. it didn't, It luckily didn't. it didn't, Yeah. fortunately it didn't, should I say. मुझे भी हुआ Hmm. एक हफ्ते का, मुझे उस चीज के लिए डांट पड़ी, that why the hell did I test. But I mean हैं? I was having symptoms. अरे मतलब मैंने ऐसे टेस्ट किया तो बोल के तो तूने टेस्ट ही क्यों किया, इतने सिवियर सिम्टम्स भी कहाँ थे. मैं कहा मेरे को पता नहीं, थॉट आया कि I थोड़ा mean, सा भी bro. है तो why not, है ना. तो मतलब अरे मतलब उस तरह, लेकिन ना फनी वे आई Okay. वाज हाँ, यू नो हाँ, हाँ. टोल्ड कि क्योंकि now since I Right. tested, so Okay. people around me had to get tested and they also tested positive, so now they have to quarantine as well. अब यहाँ पे ना एक बड़ा मेजर गुफा होता है, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया तो फॉर्चून ऑब्वियसली मेरा पहले रिजल्ट आया और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो सबके मन में ये आ गया कि मैं ही कोविड लेकर आया था. हाँ. Whereas जिन्होंने बाकियों ने टेस्ट किया वो 4-5 दिन पहले से मेरे से सिम्टम्स दिखा रहे हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहे थे बस. नहीं, And this is the best thing. No, don't test. Don't test at all. And I don't know, man. I don't know if it's the best thing or not, but I mean, I don't know, but ठीक है. I mean, It's a very till the day you're subjective. not losing, till the day people aren't losing their lives, it's still. ठीक है, मतलब I think हाँ वो I bottom mean, line है, but okay, anyway, हाँ. moving away from COVID, man. Anything but COVID, Okay. please. So I Anything mean, but COVID. but I mean, there's one more big thing happening on the healthcare side. You know, my one of my relatives very close went to the hospital, and that's what the emergency was. The And reason of our of us going absconding. absconding Oof. for 3 months. क्योंकि Yes. थोड़ा सीन गलत हो गया था. And end of it, we ended up with a bacteria which wasn't going away after all the procedures, and it simply wasn't going away. It was a stubborn bacteria, and कर suddenly लो जो करना है, next मैं day, नहीं छोड़ता. हाँ, हाँ, डेरा सारे जमा के बैठ results आ गया. रहे हैं. हाँ. Antivirus is all gone. कुछ काम नहीं आ रहा. And you know, my father was totally against allopathy, or but he finally did go for it. But end of the day, we thought we'll give homeopathy a shot, and we went there. We took the medicine, and the next day the fever was gone. बस एक एक वो मीठी गोली से. Meaty, I mean, they gave some powder. We had that, हाँ and now हाँ we are on that meaty goli, and हाँ. it's relieving and suspicious both at the same time. It is. क्या मतलब खिलाया तूने मेरे को? बैक्टीरिया को बेसिकली डेजर्ट चाहिए था निकलने के लिए. हाँ, इसलिए हाँ. मैं बैक्टीरिया से बैठा था, भाई कुछ मीठा दो तो निकलूं, क्या सालों मेरे को कड़वी कड़वी दवाइयां डाल रहे हो मेरे अंदर. हाँ, and on top of that, हम सबको था कि यार क्या मीठी दवाई में है, क्या क्या हाँ. स्टेरॉइड्स है, क्या है, मतलब और Right. कोई मेडिसिन है. And this is a problem which is echoed around the globe. कि Right. homeopathy people aren't very clear, aren't very, you know, transparent about what they do. तो हमें बहुत डाउट था कि यार क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. And I went to see the doctor, and when this white powder was administered, I asked the doctor क्या डाल रहे हो मुंह में, and he went like ये medicine है, and that's it. ये medicine है, ये I दवाई है. mean, better doctor didn't say कि खुशी में ना मुंह में डाल रहा हूँ, नाक में नहीं डाल रहा, white powder नाक में. डाल नहीं रहा तो सब ठीक हो जाता अभी तक. ये white powder कोकेन भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है. ओह, मैंने कोकेन नहीं बोला, तूने बोला. मैं कुछ नहीं बोला. I mean, I'll take the blame, man. I take the blame. हाँ. So, but somehow it just vanished, and that's the reason we are doing the podcast today, because things just got better one day. Well, thanks to the And meaty goli then, I believe. no Thanks to one knows what happened there, but it is fine now. thanks to those I don't know, sugary powder. I think that's what मेरे को लगता है बैक्टीरिया को बस मीठा चाहिए था मीठा कि चाहिए. निकले वो. हाँ उसको. मेरा रसमलाई कहाँ, man? Where is my dessert? You know, हाँ मैं अंदर before the आके bill comes. मैंने काफी कुछ कर लिया, ऑर्गन जहाँ पे भी मैं हूँ मैंने अच्छे से हाँ. अपने वो ब्लड खाना से वाना खा मैंने लिया, खाना वाना खा हाँ. लिया मैंने. अब मेरे को कुछ मीठा दो तो अब मैं जाऊँ. मीठा चाहिए, मीठा चाहिए. But साला बैक्टीरिया. and the shape of the homeopathy medicine has changed. पहले हमें पूरा cylindrical गोला मिलता था ना, स्फेरिकल. and हाँ, spherical.
अब हाँ हमें अब सिलेंडर ट्रायंगल। अच्छा मिलता अब है। सिलेंडर पता नहीं यार, हाँ ये मेरे को पहले नहीं पता ये। आई डोंट नो इफ इट्स अ चेंज और चेंज, आई थिंक द डॉक्टर या प्रॉब्लम के हिसाब से दे मस्ट बी it's the मेकिंग। same thing. I mean, the sugary thing is the same thing. They put some medicine आई on डोंट top नो, of it and they आई डोंट jiggle नो। it, right? डॉक्टर को So चुल मची होगी, चल आज डिजाइन चेंज करते हैं, मुझे नहीं पता, हाँ, मतलब तो कुछ रीजन तो नहीं बनता काफी टाइम चेंज से करने कुछ कुछ दिया नहीं मतलब है। एक ही आज डिजाइन चल रहा है, कुछ चेंज चाहिए जिंदगी में। थोड़ा नो ये मैन, स्फेरिक स्फीयर को थोड़ा खींच देते, सिलिंड्रिकल बना देंगे। एग्जैक्टली। बट एंड नहीं, आई डोंट नो, अगेन वी हम मजाक बना रहे हैं, बट वी डोंट नो क्या पता उसके पीछे भी कोई साइंस हो। नहीं, अभी आई एम श्योर उसका साइंस कुछ नहीं है, बट साला। no, but this is just amazing, man. I mean, somehow the place where I joined as a new data Hmm. science associate, that Oh, place oh, deals with oh, 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 pharmaceuticals. oh. I ठीक could है? I could hear the pride in the word data science associate. सही में, not some analyst. Not साले कमीने। Right, directly where it hurts. ठीक Then है। so they we had a session, talking about हाँ pharmaceuticals and all, and someone brought up the fact of homeopathy, and this is they were talking about the placebo effect. अच्छा। And for the uninitiated, placebo effect is when you drink normal water and you feel that's vodka, and after हम्म 15 minutes you feel you're drunk enough. या That's basically your mind telling you that okay, पानी नहीं था, वो दारू हाँ ही था, तुमने पी हाँ लिया तो तुम्हें भंड होना पड़ेगा. भंड होना पड़े हाँ। Uh-huh. So people who believe in homeopathy and they go take the medicine, they basically, you know, they are like, okay, I've taken the medicine, now it's gonna be fine. राइट। But and it suddenly becomes fine because their mental state is better, in a better space. So that's called placebo. ओके And when we decided to go to the homeopathy, my idea was like, okay, the person believes in the system so much, maybe the placebo will act, and the या things, बी इन आवर yeah, फेवर आफ्टर दैट, यस। be in our favor. But the हाँ placebo should take more than a day, right? I mean, it should definitely take more than a day. It's not getting burned. You're right. It उतावला simply बैठा था doesn't. वो, शायद वो हाँ, उतावला हो रहा था कि मैं हाँ, आज ही मेरे को अपना रिजल्ट दे दूं। आज ही बंड आज ही होना है मेरे को. मिले, गोली मिले। हाँ. And so yeah, that is the that questions that made me question my scientific thinking. भैंचोद, मैं हाँ। क्या सोच रहा हूँ यार, मेरे को क्या पढ़ाया रखा है भैंचोद. अच्छा नहीं, बट बैक्टीरिया का कुछ आइडिया की आया कहाँ से, कुछ उसका कॉज कुछ आइडिया है, कुछ एनी It इंफॉर्मेशन ऑन could दैट? be. I mean, so what we are seeing is a resistant bacteria, and the most common reason for getting all these resistant bacteria is hospital atmosphere, because that's where your bugs are found. Because personally, a human being who is not going to a hospital much wouldn't improve the resistance against every bacteria out there, and राइट। that can only be induced into you if you're in a setting where there's a lot of antibiotics being used regularly, गॉट इट which is गॉट इट। hospital. तो मतलब जहां से So ठीक होने गए बाई चांस वहीं हाँ, पे वहीं पे तो अटक हाँ वो गए. काउंटर इफेक्ट हो गया इन अ वे। हाँ. In fact, बट the problem that we went in for was solved, but this problem, you know, केम later came up, लेटर and this केम अप। simply wasn't going away. So it एंड it व्हाट वाज it द व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉब्लम लाइक? the original problem was basically eating a lot of non-veg. This is something related to their bowel inflammation, and ओह शिट। this is actually not a very common disease found in India, and राइट। that's because of our diet. That's because we are more towards vegetarian वेजिटेरियन फूड, यस। food. Yeah, and mostly, I mean, मेरे घर में towards Malayali Christian sides, the consumption of meat is actually way more हाँ than the average Indian. इंडियन हाउस होल्ड, Because यस। if we, in fact, if we go towards the north, हम्म तेरे घर में भी ज़्यादा हाँ चिकन नहीं बनता. I मेरे घर mean, में बनता ही नहीं है, जीरो बनता है। ही नहीं है. इट्स हाँ एक्चुअली, आई मीन, तुम बाहर जाओगे तो मतलब चिकन 250 ग्राम खरीदोगे. हमारे घर में करेक्ट। कभी 250 ग्राम चिकन नहीं खरीदते, हम पूरा चिकन खरीदते हैं.
क्या 2 टांगे दे रहे हो, 1 हाँ, फ्लेश 2 ले रहे हो, टाँगे पूरा भाई। पकड़ाऊंगा बे, क्या हाँ। ये 250 हाँ, ये सब 250 पौवा आधा नहीं आता, पूरा। नहीं, नहीं, पूरा बॉटल आएगा तो। हाँ, आएगा तो पूरा मुर्गा, आएगा तो पूरा खंबा। बस, खत्म। बस फिर यही ये होता भी है। इससे फिर जो होगा उसको बोलेंगे प्लेसिबो। हाँ। हम कहाँ पिए? हम काफी है। But honestly, this is something even I should imbibe. I'll tell you my diet. मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ नॉनवेज बनता था, and at least one meal would have a size of a serving of meat in it, and that's Right. something which is very common to Europeans or Americans. मैं ये Oh नहीं कह रहा कि yes. मेरा यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग है, ना मैं ना वो नहीं ब्रो, कह रहा, बट वही है तू वही तो है तू। steak या consumption, yeah, हाँ, any thing that feels hard on your bowel movement or your मीट digestion. कंजम्पशन ऑल इन ऑल, नॉट Meat स्टेक, consumption, मीट कंजम्पशन। हाँ meat consumption, that हाँ can really affect your, I mean, that is हम्म, why the inflammation in the large intestine happened. हाँ And if you are listening to this not for the love of animals, or you don't have to turn vegan all the way, but at हम्म। least you need to know what you're eating. एक्चुअली you इस know पे मेरा भी एक क्वेश्चन आया था कभी कि इज द ह्यूमन बॉडी नेचुरली बिल्ट फॉर वेज और नॉन वेज फूड और नॉट। मेरे को एक क्वेश्चन it's आया था कभी। naturally built for veg food, I तो believe मैंने so. हाँ तो मैंने थोड़ा पढ़ा था, जितना मैंने पढ़ा था उस पे मेरे को जितना याद है कि दीज दीज कार्निवोर एनिमल्स, इनके जो सो मीट में क्या है, मोस्टली प्रोटीन है, Yeah, और right. प्रोटीन ब्रेक होके अमीनो एसिड में ब्रेक होके वो निकल जाता है, उसके बाद वो मीट बॉडी में पड़ा रहता है, और उसको ज्यादा टाइम लगता नहीं है प्रोटीन को निकालने में हमारी बॉडी को मीट में से। Mm-hmm. तो बाकी जो मीट बच गया बॉडी के अंदर, जो वेस्ट मीट है, तो इसको निकलना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है टू टू फॉर दिस थिंग टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी, यू नो, Right, right, as soon as possible. So for this purpose, these carnivore animals specifically, they have a very smaller intestine in length. right. तो जल्दी निकल जाता है। Whereas our body, अगर आई डोंट नो अगर तेरे को याद है या नहीं, हमारे को एक बार बताया था, हमारे बॉडी के अंदर कुछ 6 या 8 फीट का इंटेस्टाइन होता है हमारा, जैसे कॉइल्ड अप होता है। True. और मेरे को याद है हमें That's जब एट्थ small एट्थ क्लास, intestine is actually the bigger one. Large स्मॉल intestine इंटेस्टाइन इज द बिगर वन, यस is somewhere around 3 meters. करेक्ट। तो थ्री मेरे को मीटर्स याद भी है भाई उतना ही हो गया। 300 एग्जैक्टली, 300 इनफैक्ट मुझे तीन एक बार याद है, मैंने इस मीटर पे एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछा था स्कूल में, हम 7th 8th क्लास ओके। में थे। तो मेरे से टीचर ने हमें बोला कि इंटेस्टाइन जो होता है हमारा इतना लंबा होता है, 3-4 मीटर, दस लाइक अबाउट 6-6.5, आई थिंक प्रोबब्ली मोर देन दैट फीट। छोटे लोगों का छोटा होता है क्या तो मैं वो? ऐसे ऐसे खड़ा होकर पूछा, मैं कहा मैम मतलब आप कहना चाहते हो मैं जो 6'3" हूँ, मेरा और उसका जो 4 फीट 9 इंच है, हमारा इंटेस्टाइन की लेंथ सेम है। खैर एनीवे, बट so yeah, coming to the point, our intestines are pretty long that way. So this या non-veg ट्रू। food, once after the proteins have been extracted and broken into amino acids and everything, the meat stays in the intestine for a very longer period of time, and hence it becomes it begins to rot, and start causing has the कुड बी possibility, दैट, or has the potential to cause some or the other problem. Having कुड बी said दैट। that, हाँ, could be that, एंड again ये मैंने एक दो जगह पढ़ा था, तो And मेरे को also any carnivore who's into eating meat, like a tiger, like a leopard, they don't get meat all day long. They don't या eat 3 square meals. They eat यस once a week. हाँ, तेरी तरह हाँ, है। खरीदेंगे तो एक मुर्गा पूरा, एक एक मुर्गा। पूरा हाँ, डियर। हाँ, और वो एक बार खाने के बाद बैठ जाएंगे, उसको बैठ जाएंगे। शांति होगी, मतलब हाँ that is the difference between these tigers which are found in monasteries, because they are fed artificially, they are fed chicken or whatever meat they're getting every day, and which makes them fat. And if you look at all these वाइल्ड footages of वाइल्ड wild टाइगर्स। tiger or tigress, हम्म they are pretty thin, they are fit, हम्म and that really makes a difference. uh, आई थिंक दैट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन, जैसे शहर के जो लोग होते हैं वर्सेस जो गांव के लोग होते हैं। no. शहर वाले, मैं मतलब मस्ती की तरह कह रहा हूँ, जोक की तरह कह रहा हूँ, हाँ, शहर वाले अनफिट बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, कुछ नहीं है। वो गांव वाले खेतों में निकलते हैं, पूरा काम करके आते हैं, तो फिट होते हैं, इतना जितना मर्जी खिला दो बॉडी पे लगता ही हाँ, नहीं है वही वो। है, वही है, बट हाँ। एनीवे, हाँ, Eat only when you're hungry. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And इस पे भी एक fat diet है, intermittent fasting. I don't know if it's a fat diet, but have you tried it out?
I've been doing that for a very long time now actually, और मेरे को रिजल्ट्स दिखे हैं, बट मेरा like I didn't start intermittent fasting with the thought of starting it, frankly speaking. I have been a big foodie, ठीक है, मैं बट इतना समझ गया था आज से लिटरली 1-1.5 साल पहले कि मैं आधे से ज्यादा टाइम जब खाना खा रहा हूँ ना, आई एम ईटिंग टू प्लीज माई टंग एंड नॉट माई स्टमक, वेयर एज द नीड ऑफ द मैटर इज कि मेरे को पेट की भूख मिटानी है, गेटिंग इट. Fair enough. एंड देन आई रियलाइज कि ब्लडी हेल, जो मेरा पेट है भाई वो इतना सा है, लिटरली मेरी फिस्ट से भी इतना सा पेट होता है हमारा, जे शेप, अगर याद है Right. 9th 10th बायोलॉजी, राइट, इतना सा Right. शेप होता है. उस इतने से शेप में मैं 4 रोटियां और चावल, दाल, भैंस की, मतलब चिकन का एक, मतलब आधा चिकन, 2 ब्रेस्ट पीस सब ठूस देता हूँ, तो क्या बन जाता होगा, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है, मैं उसमें ठूस रहा हूँ फालतू में. फिर मेरे को हिट होने लगा कि एक्चुअली में मैं 2 रोटियों के बाद आई एम जस्ट नहीं. ईटिंग टू प्लीज माई टंग. मैं बस अपने मन को Exactly. खुश कर रहा हूँ कि इसके बाद शायद ही खाने को मिलेगा नहीं, तो अब भी खा लो. मतलब मैं काउ या कैमल की तरह एक्ट कर रहा हूँ, मैं अंदर स्टोर हाँ करने की हाँ कोशिश हाँ कर हाँ. रहा हूँ, गेटिंग इट. I get that. हाँ. और ये मुझे हिट हुआ. एंड देन सेकंड मेरे को एक चीज हिट हुई कि जितना मैं अपने आप को थोड़ा लाइट रखने लगा इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो कि बॉडी में एक टाइम पे आई एम नेवर फुल, यू नो, नेवर 100% फुल, आई एम Right. लाइक 70-80% फुल. मैं वो गैप छोड़ रहा हूँ जिसको कहते हैं ना कि टंकी में हवा आने की भी जगह रखो, ऐसा ना हो कि टंकी फटी हाँ जाए, हाँ हाँ. गेटिंग इट, उस सेंस में. तो I started feeling कि I was mentally and physically more active in doing things. You know, I was more fast. Just And because you're not lazy. I'm not Because lazy, you exactly. know. जिसको हम लोग कह देते हैं कि हाँ. तामसिकता नहीं आ रही थी. You know, I was having वही. very, हाँ वो होता है. तो सो मेरे को ये 2 चीजें बहुत हिट करी, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू कंट्रोल इट. और जब मैंने कंट्रोल करने लगा, फिर इवेंचुअली मुझे मालूम पड़ा कि ये भी कोई चीज होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड आई वाज लाइक ओ शिट, मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, एंड ये है भी, बस अब इसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया है. और अब ये थोड़ा, आई थिंक ये पॉपुलर हो रहा है विद द वेस्ट कमिंग इन, बट आई रियलाइज कि एनीवे दिस हैज बीन लाइक No. fasting has been a thing in our this thing Has been anyway. a thing in a It lot of has been a cultures. thing in It a has lot of been a thing in our culture. It has been a in thing, a but lot we of just never religions, right? realized it. We just never realized it, that how important it is, like in a way, Or the to fact cleanse that, your body, to be purer, to be more active, you know, that way. or the बोल बोल fact क्या that कह रहा है? older people don't eat food once the sun sets, and they'll Yes, only eat their breakfast after sunrise, which is intermittent fasting. Because 6 in a बजे के way, बाद हाँ, 6 in a बजे way, के तू खाना खत्म करके बैठ जा, और अगले in a दिन way. 6 या 7 बजे भी हो जाए, तो you get a 13-hour break in your body system, and you're Exactly, light, exactly. So I mean, and this is one thing, and the other side of people are who think that they should eat 5 to 6 meals a day, you know, the Yes, bodybuilders. the Come bodybuilders. come but that's That's now, their we goals. don't उनका we goal है, don't वो हाँ, उनका goal है. Exactly. I'm no one to say कि क्या सही है क्या गलत है, but I feel I don't know, this is one thing. I What mean, I I feel feel is कि कि you should sit alone, think what your body actually needs, and what you want your body to do, and based on that feed it, is what I'll suggest. that is, मतलब yeah, किसी को बॉडी बिल्डर eat बनना है, only उसको when you're समझ आ, hungry. एग्जैक्टली, किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, उसको इस चीज की जरूरत है, तो वो कर रहा है. तुम्हें फिट रहना है, तो बी वेरी अटेंटिव ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. तुम फूडी हो मेरी तरह, बट तुम्हें फिट भी रहना है, तो नाउ इंस्टेड ऑफ यू नो, अगर मेरे को कहीं कुछ खाना होता है ना, मैं पहले एक बड़ी नेचुरल चुल थी कि यार चिकन मोमोज खाने हैं, 1 प्लेट तो मंगाएंगे कम से कम, आधा गेटिंग इट. plate. अब मैं हाँ. आधा प्लेट करता हूँ कि मतलब भाई वो चौथे मोमोज के बाद 5वां मोमोज कोई बेटर तो हो नहीं जाएगा, नहीं टेस्ट तो वो. वही है ना मोमोज का. हाँ तो वही. मैं 4 मोमोज खा लूंगा, उसके अलावा मैं अगले 4 कुछ और चीज ट्राई कर लूंगा, तो मैंने पेट भी भर लिया, मैंने 2-3 चीजें भी ट्राई कर ली. मैं मतलब Mm, I don't okay. know. This will be very different to many people. This will be like, अरे क्या बोल गया है, पागल बना रहा है. But dude, I mean, it's your life. End of the day, I Yeah, took end it of the because day. I found this to be healthier for me. It worked out fine for me, and I've seen it working out fine for many other people. So uh, I think it's a good this thing. It's a good it's this thing it's to take actually up. now that we are all working from home,
our physical activity has really reduced, man. Gone, And man, gone. इतना जरूरी इतना खाना requirement नहीं लगता मेरे को, you know. नहीं I would होता. never grow a belly when I was in college just because Right, I was walking enough, right. you know. And I'm now randomly growing a belly, and the intake is the same because but I'm just sitting on a chair all day long, you know. या या मैंने पता है एक और चीज, अब अकेले रह के व्हेन यू कुकिंग एंड ऑल, थोड़ा और मेरे को रियलाइज हुआ है कि यार अपने घरों में जो हमारी मदर्स होती हैं ब्रो, मतलब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ईटिंग व्हाट 3 मील्स अ डे, एटलीस्ट Yeah. ब्रेकफास्ट लंच डिनर. ठीक है. वो Right. 3 मील्स में भी एटलीस्ट देयर आर 3 ब्लडी डिशेस मैन. तू लंच ले ले, एक दाल, एक रोटी, एक सब्जी. ये इतना तो मतलब मिनिमलिस्टिक फूड है किसी भी हाउस होल्ड हाँ का हाँ. इंडिया में, अपने अपने True, घरों true, में. true, नॉट जस्ट true. इंडिया, कहीं पर भी. और अब मेरे को रियलाइज होता है क्या जरूरत है यार, मतलब दाल रोटी खा लो, दाल चावल खा लो. अब थोड़ा एक अलग सा मेरा अफेक्शन हो गया उस फूड के लिए कि यार कितना, क्योंकि पेट तो भर जाता है, हेल्दी भी है, तो क्यों मतलब 4-5 प्लेथोरा ऑफ सब्जियां, व्हाई डू यू नीड प्लेथोरा No, ऑफ so सब्जियां मैन? one sabji is needed, right? One sabzi is needed man, that's more than enough. That's more than enough. दाल रोटी सब्जी काफी है, बट नहीं, चावल भी लाओ, दही भी लाओ, दाल 2 तरह की, सब्जियां कम से कम 3 तरह की हो. पता नहीं है मेरे Mm. को. अब मैं तो अपनी मॉम को बोलता हूँ कि यार क्या इतना क्यों बना रहे हो, मतलब जस्ट हाँ जस्ट वही कट है. इट डाउन. यू डोंट नीड टू. Maybe. I बट mean, huh, it's not necessary, but yeah, it's actually a new thing also that have a timetable of what you're going to make for यस, 3 days. You know, this solves the problem. I आई don't know. डोंट नो, आई डोंट नो, पता नहीं. खैर एनीवे, बट नहीं, आई थिंक वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम नॉन वेज. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग टू ऑल द नॉन वेज लवर्स. लेट मी टेल यू, Thomas and you, me are like we're talking about it. Trust me, we haven't left non-veg when we are saying all this. Okay, Yeah, uh, it's hard. I know it for a fact. Thomas hasn't. I know that I am planning to, in a way, go. I'm anyway, like most of the time, I'm vegetarian, eating veg only. So I'm as good as veg only. मैं बस बाहर non-veg खा लेता हूँ. But all I'm saying is कि if you're eating non-veg, eat it in a controlled way, maybe, or be Or alert of to what or you're eating. And it can really be bad. It it can. can I be mean, bad, man. It can see, be it's bad. like every smoker at the age of 80 is not getting cancer, but क्या मैं सुना I नहीं, mean, फिर से बोल. I see people who smoke and they're 80s and they're in their Yeah. 80s and they're still walking without cancer. But the ones who Yes. get cancer, they are Yeah. screwed. They're screwed, man. And they're all like till the time they got cancer, they'll defend their smoking by quoting हाँ those people. अरे 80 का तो वो भी था ना बे, हाँ कुछ हुआ हाँ. थोड़ा ना उसको. अरे तो So भैया. it's like redemption. मतलब do your thing, Redemption. do your part. Then you God knows if it will happen or not. I agree. I So think on that's this note we can wrap it up. That yeah. do your part and do your thing. Be very aware of what you're doing, and rest the nature will play its game. But I think यही था. इसी पे end करते हैं. कुछ. And I think again apologies for making guys wait for so long. Yes. And this is again a promise to you guys that we'll try not to break it henceforth. And this Yes. is a revival of the clean slate graffiti. Thank Yep. you everyone. Thank you for We're joining back. us. Thanks a lot, guys. Take care.